So, dear students, chapter number 11 from your 6th standard CBSE syllabus. That chapter I'm going to start today. Chapter number 11, measurement and motion. Is it okay, clear? Measurement and motion. Yes. At the ending. Okay. So, Ma'am, we have learned this lesson in from September. the CBSE syllabus. ओके जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके मैंने चैप्टर नंबर 1 से रिकवरी स्टार्ट की है एंड रिकवरी क्लास जनरली संडे को ही होता है। आपको पता होगा सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 की रिकवरी क्लास ली। आफ्टर दैट आई हैव टेकन रिकवरी क्लास ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, and 10 chapter I have deliberately skipped because it long chapter hai, it needs more time. So now again chapter number 11, that is measurement and motion. Chapter number 10 also I will take, but later on. Clear? So today chapter number 11, that is measurement, and next one, that is motion. So in our day-to-day life we are purchasing the different things, and for that we are using the different unit. For example, I have to purchase the sugar, then which unit I am using? आप शॉपकीपर के पास जाने के बाद क्या बोलते हैं? मुझे 1 शुगर दो। क्या बोलते हो? केजी, यस, किलोग्राम। then I have to purchase the potato. okay, कौन सा यूनिट मैं यूज करूंगी? kg. I have to purchase milk. Yes. Okay. Then I have to tell time to anyone. Yes. Okay. Then next one, I have to measure my body temperature. Yes. Okay. So we are using. Just right now I have traveled 3 kilometer. ओके तो मैंने यूनिट दिया किलोमीटर. ओके राइट नाउ जस्ट आई हैव ट्रेवल डिस्टेंस दैट इज 3 kilometer. So like this, in our day to day life we are using the physical quantity and we are using their units also. Okay, we are using physical quantity and we are using their unit also. So early human being is used to travel by foot and carry their good themselves. My sound is okay? Anyone is saying that sound is not coming? From my side sound is okay, 100%. Okay, so first of all, that is history of transport. Human being in early days, human being used to travel by foot and carry their goods themselves. After a while, they have used animal to carry them and their goods when they transport or travel from one place to the another place. Then later on the invention of wheel, उसके बाद wheel का invention हुआ. So the invention of wheel changed the way people travel. Then then next one, carts, and carts are drawn by the oxen or horses. Animals are used to pull up that cart. So people have to go from one place to another place. Suppose they have to cross the river. Okay, in older days people have to cross the river, then they are using a hollow hollow wooden log. Okay, they are using the hollow wooden log to travel across the river. And later on
boat is invented. So boat help to sail on the water or to cross the river. So slowly there is again invention in the transportation, that is railway, स्टीम इंजन. सो स्टार्टिंग में क्या था, स्टीम इंजन, देन रेलवे. सो दे चेंज द वे ऑफ पीपल एंड गुड्स वेयर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. सो रेलवे में सिर्फ हम ट्रेवल करते हैं क्या? नो, गुड्स, मटेरियल आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड. Okay, goods are also transported from one place to the another. So later the invention of aeroplane, then by the Wright brothers, was the revolutionary step in the history of transportation. So ये transportation की history में क्या हो गया? Revolutionary stage हो गया. So revolutionary step in the history of transportation. And at the present, several advanced method of transport are available. We are transporting, we are traveling with the help of cycle, bicycle, scooter, auto rickshaw, bus, truck, train, car, ship, aeroplane, spacecraft. They are available for the transportation. So transportation has become so advanced nowadays. Okay, so we have started exploring the space through the spacecraft. Astronauts who travel into the another space cannot throw their waste into the space because it may hit the spacecraft. So therefore, an empty cargo spacecraft, okay, an empty cargo spacecraft is used to load their waste. जो लोग स्पेस में जाते हैं, अपने जैसे कहीं पे भी वो उनका वेस्ट मटेरियल कचरा फेंकते हैं क्या? नो, एन एम्प्टी कार्गो spacecraft is used to load the waste and transport it back to the earth. जो वेस्ट है, सभी वेस्ट एम्प्टी कार्गो स्पेसक्राफ्ट में कलेक्ट करते हैं एंड दैट स्पेसक्राफ्ट रिटर्न टू द अर्थ. So it dives toward the ground and it gets so hot and it burn up. So this one is the history of transport. Now measurement. So what is the meaning of measurement? So measurement is the process of determining length, size and amount of physical quantity by using any fixed physical quantity. Okay, comparing the unknown quantity with known quantity. Comparing unknown quantity with known quantity is also called measurement, or the process of determining length, size, amount of the physical quantity by using some specific device is called measurement. And a physical quantity has to be measured with some fixed quantity. The physical quantity, for example length है, okay, then next one time है, ये सब physical quantity है. So this physical quantity is measured with respect to some fixed quantity, and the fixed quantity we use to measure the physical quantity is called the unit. Unit is the fixed quantity. So there are the different physical quantity and they are having the unit. So there are 7 basic fundamental physical quantity. Okay, जो physical quantity है उसमें 7 basic fundamental physical quantity है. Now ancient time, peoples are using the body parts such as handspun, then complete handspun, then next one foot span, then cubic and pace
for the measurement. Nowadays we have the scale available, we have meter tape available, we have metal rod available, we have watch available, we have liter units, liter, half liter, 1 liter to 50 liter. There units are nowadays we have available, but in older time that peoples don't have the standard units, so how they measure? So ancient people use the different body part such as handspun, then next one, okay, handspun, then next one foot span, then cubit and pace for the measurement. So by using handspan for measuring the short distance is very common practice. ओके, आपके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, जो ओल्डर पीपल थे, वो डिस्टेंस कैसे मेजर करते थे? बाय यूजिंग द हैंड स्पैन. जब शॉर्ट डिस्टेंस है देन इट्स ओके, ओके, बट मुझे मेरे कॉलोनी का वन हाउस से लेके लास्ट हाउस तक डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या मैं हैंड स्पैन से करूं? नो. सो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस इट्स ओके. So, by using the handspun for measuring short length is a common practice even today. So, in your home, you will have noticed that your mother, grandmother measure the length of woolen sweater. So, short distancing. Then it is okay by using the handspun. Okay, but when we have to measure the long distance, then handspun is not suitable. Then next one, from elbow, okay, from elbow to your middle finger, that one is called cubit, and the distance between the two legs, they are called pace. So standard unit of measurement. Nowadays, we are using the standard units of measurement, but this standard of units of measurement किसने बनाई? Okay, तो किसने prepare किए? Nowadays we have standard units, and why there is a need of standard units? Suppose I measured the length of this board with my handspan. It shows the reading that is 10 handspan. And if any small baby measure the length of this board by using the handspun, then it having the different reading, because that baby having the distance between two hands, that one is the less. So reading is not equal, not exact. It vary from person to person. मेरे हैंडस्पन ने रीडिंग बताया 10 हैंडस्पन, स्मॉल बेबी है उसके हैंडस्पन ने रीडिंग बताया 20. आप में से किसी ने आया, किसी ने मेजर किया, वो तो 15 आ गया. सो इक्वल है, तो कौन सा एग्जैक्ट है? 10 एग्जैक्ट है, 20 एग्जैक्ट है कि 15 एग्जैक्ट है? सो देयर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ओके, सपोज आउट ऑफ इंडिया कौन से भी कंट्री में टेम्परेचर मेजर किया विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, देन सेम टेम्परेचर इज गिवन. ओके, उन्होंने भी 1 kg शुगर मेजर की, सेम होती है इंडिया में भी और अदर कंट्री में भी, बिकॉज द यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट इज स्टैंडर्ड. सो देयर इज अ नीड ऑफ standard unit, so that unit are same all over the world. ओके, पूरे वर्ड में यूनिट क्या है? सेम है. सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन, देखो मेरे हैंडस्पन से किए तो इसकी लेंथ आई सपोज 10, स्मॉल बेबी के हैंडस्पन से किए 20, आपने किए 15. सो विच वन इज एग्जैक्ट? सो बेटर वे इफ आई यूज द स्केल, देन इट गिव्स मी एग्जैक्ट रीडिंग. सो स्केल से मैंने किए, आपने किए और किसी ने भी किए, तो यूनिट उसके जो लेंथ है कैसी आएगी? सेम, बिकॉज स्केल इज स्टैंडर्ड यूनिट. सपोज मैंने बताया कि ये 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से किसी स्टूडेंट ने मेजर किया, यह सेम ही आएगा. किसी ने भी मेजर किया तो क्या आएगा? बिकॉज स्केल इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट. ओके, जो स्केल जो यूनिट यूनिट है, डिवाइस है, इट वन इज द स्टैंडर्ड. तो सबसे पहले किसी ना किसी ने तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए होंगे ना. we are using the scale, we are using the kilogram, किलोग्राम का वेट होता है.
देन हाफ केजी का वेट वेजिटेबल के पास, वेजिटेबल शॉपर्स के पास देखे होंगे, हाफ केजी का वेट होता है ना। सो ये वेट, इवन आप क्लोथिंग पे शॉप पे गए, आपको 1 मीटर है, उनके पास वो मेटल का रॉड होता है। तो ये यूनिट सबसे पहले किसी न किसी ने बनाए होंगे, उन्होंने हर लोगों को एक एक यूनिट दे दिया, और उसके हमने फैक्ट्री में कॉपी बना लिए, उसके हमने फिर से यूनिट बना लिए। सो इन द 1670, फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, that is Gabriel Morton, created a standard set of unit of measurement, and that one is called metric system. And this system was standardized Republican France in 1790. So this system is adopted the standard unit of measurement. However, this system is also सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये जो यूनिट्स थे किसने बनाए थे, 1670 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर था, उसने बनाए थे। फ्रेंच लोगों ने ये यूनिट एक्सेप्ट भी कर लिए, अदर कंट्री वालों ने भी एक्सेप्ट कर लिए, but this unit is also not complete. There is also some problem, okay, does not solve the problem. So all over the world, peoples are using the different sets of standard units of measurement. So now again पूरे वर्ड में यूनिफॉर्मिटी चाहिए। अपने अफ्रीका में भी काउंट किया, अमेरिका में भी काउंट किया, और बुल्ढाना में भी काउंट किया। 1 kg शुगर सब जगह पे सेम आनी चाहिए। So to having the uniformity all over the world. Okay, Kavya, I am sharing the PDF. Better way you do the Xerox and read it, no problem. Okay, so to sake of uniformity, scientists all over the world have accepted again common set of standard units of measurement, and that next second time, first time also units are decided, but they are having some problem. So again the scientists in the 1960, the international system of units, they have make again the unit, international system of unit, that is SI unit. Scientists of different country adopted this SI unit in 1960. ओके, सो 1960 में फिर से सब साइंटिस्ट कलेक्ट हुए, एंड उन्होंने यूनिट्स डिसाइड किए एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए। फॉर एग्जांपल 1 kg का एक बनाया, फिर उन्होंने उसके 100 कॉपीज बनाए, सब कंट्री को एक एक कॉपी दे दिए। कंट्री वालों ने फिर से अपने अपने हिसाब से मेनी कॉपीज बना ली। Okay, so 1960, the international system of unit is decided, and this unit are same all over the worldwide accepted. So the SI unit for the length, मुझे लेंथ मेजर, सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, एसआई का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, और उसको ही बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और उसको ही हम एसआई बोलते हैं। एसआई मींस सिस्टम इंटरनेशनल। सो एसआई यूनिट फॉर द लेंथ, मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो एसआई यूनिट क्या फिक्स किया गया, मीटर। ओके, मुझे मास मेजर करना है, एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। मुझे टाइम मेजर करना है, ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। सो दिस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दे हैव डिसाइडेड। ओके, इंटरनेशनल जो सिस्टम है उन्होंने यूनिट्स डिसाइड किए। ओके, सो उन्होंने सिर्फ लेंथ, then next one that is mass, and then next one time। ये जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी है उसके ही यूनिट उन्होंने डिसाइड किए। सो लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, एंड टाइम के लिए सेकंड। ओके, सो दिस यूनिट्स आर डिसाइडेड। ओके, सो पीपल in the different type the message only, people in the different part
of the world also use system international. SI means system international. So people in the different part of the world also use another system for measuring the unit such as CGS, MKS and FPS. Okay, older days में FPS use करते थे. Nowadays we are using the MKS and CGS system. MKS को ही SI system बोलते हैं. Okay, so how many system? More system है actually. Fourth one which one? MKS को ही बोलते हैं. So first one that is MKS system, उसको ही SI system बोलते हैं. Then next one that is CGS system. Next one that is FPS system. So कितने system है? There are the three system. ये जो three system है उसमें कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं? लेंथ, then next one mass, and then next one time. Okay, so length है, then mass है, and then next one time. So this physical quantity are measured in the different unit. अलग अलग system है. Okay, so these systems are using यूज. तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? दैट इज मीटर. मास के लिए क्या यूज करते हैं? किलोग्राम. टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? सेकेंड. सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? दैट इज सेंटीमीटर. मास के लिए क्या यूज करने वाले हैं? ग्राम. टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? सेकेंड. एफपीएस लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? फुट. मास के लिए पाउंड एंड टाइम के लिए सेकेंड. ओके, अंडरस्टैंड? Is it okay? Understand? क्लियर? ओके, एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड. सीजीएस सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड. देन नेक्स्ट वन लेंथ है. एफपीएस सिस्टम में लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड एंड टाइम के लिए सेकेंड. क्लियर? इज इट ओके? Okay. So the unit of a quantity is written in small letters. क्वांटिटी है उसके जो यूनिट है, तो यूनिट कौन से स्मॉल लेटर्स में नोट डाउन करते हैं? सो दैट इज मीटर के लिए एम यूज करते हैं, किलोग्राम के लिए केजी यूज करते हैं, सेकेंड के लिए एस यूज करते हैं, एंड देन नेक्स्ट वन केल्विन. टेम्परेचर, यस, टेम्परेचर कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? यस, ओके. सो टेम्परेचर का जो एमकेएस और एसआई यूनिट है दैट इज द केल्विन. ओके, टेम्परेचर के लिए हम डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, फ़ारेनहाइट करते हैं, बट उसका जो एसआई यूनिट है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट, ओके, क्या है टेम्परेचर का एसआई यूनिट? दैट इज केल्विन. ओके, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट, टेम्परेचर का 3 यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड नेक्स्ट वन इज केल्विन. सो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है दैट इज केल्विन.
Is it okay up to this? So now next one. So is it okay up to this? Is it okay? Okay. So next one, that is length, mass and time. उसके multiple and sub multiple से. So 10 millimeter. Okay, 10 millimeter is equal to 1 सेंटीमीटर. ओके, 10 मिलीमीटर आप सबका हो गया होगा फिफ्थ स्टैंडर्ड में. ओके, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. नाउ बेसिक मास का है, that is 1000 milligram is equal to 1 gram. Then 1000 gram is equal to 1 kilogram. Then 100 kilogram is equal to 1 quintal and 10 quintal is equal to 1 metric ton. Okay, so 100 kilogram is equal to 1 quintal and 10 quintal is equal to 1 metric ton. Then 1000 millisecond is equal to 1 second. 60 second is equal to 1 minute. 60 minute is equal to 1 hour. 24 hour equal to 1 day. 7 day equal to 1 week. 4 week is equal to 1 month. 12 months equal to, okay, then 10 year equal to 1 decade. 10 year equal to 1 decade. Then 10 decade is equal to 1 century and 10 century is equal to 1 millennium, that is 1000 year. Okay, yes. Okay, very good. So, next one, that is how to measure the length. See, हमने अभी देखा length, length के unit देखे, small unit, bigger unit. Then next one, that is mass, and then next one, that is time. So length, mass and time. So सबसे पहले हाउ टू मेजर द लेंथ. हम लेंथ कैसे मेजर करते हैं? सो लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. ओके, लेंथ क्या है? लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, एंड इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग स्केल. ओके, लेंथ हम किससे मेजर करते हैं? मेजरिंग स्केल और मेजरिंग टेप. उसमें भी स्मॉल साइज का भी टेप आता है और जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग यूज करते हैं दैट इज बिगर साइज टेप. सो लेंथ किससे मेजर करते हैं हम? सो टू मेजर द लेंथ वी आर यूजिंग द स्केल और मेजरिंग टेप. Okay, suppose I have to measure the length of this hall. I am using the measuring tape and
I have to measure the length of this book. Yes, okay. जब small scale पे small measure करना है, then we can use the scale. But मुझे ये all की length measure करनी है. Better way I am using the measuring tape. Okay, so there are the two devices, that is scale or measuring tape. Now again there is a one device that is called vernier caliper and screw gauge. There are the two devices, vernier caliper and screw gauge are used to make the accurate distance or again small distance. Suppose I have to measure. Take 1 minute, give that bottle. This side one. Yes, either one here. Okay. So now, suppose I have this tip. Okay, I have this bottle lid or tip, and I have to measure its inner distance. So sometimes tape not give the accurate measurement. For that, वर्नियर कैलेपर इज यूज. ओके, सो यस मेरे पास है, आई शो यू. ओके, सो ये जो बॉट ओके, ये जो इनर इनर साइड की मुझे लेंथ मेजर करनी है. सो बेटा कपाट में होगा, वो कपाट में लेफ्ट साइड पे. ओके, सो इनर साइड का मुझे एग्जैक्ट लेंथ मेजर करना है. यस, दैट एंड लेफ्ट साइड, ओपन द डोर. Okay, to measure the accurate length or inner surface. Yes, okay, I need the vernier caliper. देखो ऐसे होता है vernier caliper. Okay, such type of device is vernier caliper. And then next one, that a thing which we have to measure, it is fixed in between the two sides, and then we measure the length. Okay, ऐसे जो इनर साइड के है कि जहाँ पे स्केल से हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिल सकता है, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग the device, and that device is called vernier caliper. So this device is vernier caliper. So vernier caliper, screw gauge, it is used to make the accurate measurement. Now correct measurement of length. So there are some points I have to measure the length of my book. Okay, मुझे ये मेरी बुक है उसकी लेंथ मेजर करनी है by using the scale. So there are some important points. So first one, ensure that scale is kept straight. वो जो scale है मुझे कैसे रखनी चाहिए? Straight and align along the length of the object. Second one, place the scale on the object in such a way that zero of scale is at the starting. ओके, जहां से मुझे मेजर करना है, जहां से ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग होने वाला है, वहां पे जीरो आना चाहिए. ओके, सो सेकंड पॉइंट, that is place the scale on the object in such a way that zero of the scale is at the starting point from where we have to measure the length. Third one, to ensure that end of the scale are correct. Scale is not broken. Okay, scale broken nahi honi chahiye. Okay, ensure that end of the scale are not broken. If the edge of the scale is broken or worn out, then we cannot properly measure. And last instruction is your eye angle. ओके, आई एंगल कैसे होना चाहिए? नॉट द टिल्ट एज अ लेफ्ट राइट, ऐसा टिल्ट नहीं, एग्जैक्ट. ओके, आपका जो आई एंगल है, सो योर आई आर एग्जैक्टली अबाउ द पॉइंट. आपका जो आई है कहाँ पे चाहिए? एग्जैक्टली अबाउ द पॉइंट. सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन टू मेजर द लेंथ. ये क्या है? इंस्ट्रक्शन है टू मेजर द length. Now measuring the length using the divider. So a second way we can measure the length
by using the divider. So first one, I have to measure the length of this board. Okay, so I have taken the divider. I have fixed the distance, that is 5 centimeter, and I repeat that divider one time हो गया, two time हो गया, three time हो गया, four time हो गया. One divider के बीच में का distance कितना है 5. ओके 5 और 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा बोर्ड कितना हो गया 10. सो 5 into 10. ओके, लाइक दिस वी कैन मेजर the length by using the divider. ओके, डिवाइडर को यूज करके भी हम लेंथ मेजर कर सकते हैं. Now next one, that is the measuring the length of the curve line. ओके, कर्व लाइन में कर्व लाइन की लेंथ मेजर करना है. सपोज दिस वन इज द कर्व लाइन, इसकी मुझे लेंथ मेजर करना है, तो मैं क्या स्केल ऐसे 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 स्केल करूंगा. ऐसे ऐसे स्केल मैंने की तो हो जाएगा क्या? नो, इट इज आएगा रीडिंग बट नॉट एग्जैक्ट, नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट स्टैंडर्ड. ओके, so first one, I need the thread and I need the scale. So I need the two things. मुझे कर्व लाइन है, कर्व लाइन की लेंथ मेजर कर लेंथ मेजर करनी है. I need the two things. First one, that is thread, and next one is scale. मुझे टू थिंग्स लगने वाले हैं, उसमें से फर्स्ट थिंग है that is thread, and second one, okay, yes, okay, कर्व लाइन थ्रेड, एंड थ्रेड के साथ स्केल भी लगने वाली है, नॉट ओनली थ्रेड. okay, so I have taken the thread, and that thread is exactly completely I match with the curve line. कर्व लाइन के साथ में थ्रेड क्या किया, एग्जैक्ट मैच कर दिया. आफ्टर दैट आई मेक दैट थ्रेड स्ट्रेट, and then by using the scale, okay, by using the scale we can measure the length of curve line. Clear? Is it okay, dear students? Okay, so now next one, that is importance of estimation. Estimation means not exact, approximately. In Marathi we call it as a andaze. Okay, suppose I ask anyone, that is, can you tell me the length of this board? So students are giving different answers. Okay, can you tell me the height of this board? So different students are giving the different answer, that is estimation. So in many time we need the accurate measurement of physical quantity. So for that we are using the devices. Okay, so doctor have to given the medicine, so it need the exact temperature. वहां पे estimation करके चलेगा? No. So doctor need the exact temperature. So there are so many profession. doctor है, scientist है, research work है. So some maximum time we need the exact measurement, but in our day to day life it was not possible for us to do the exact measurement. For example, your mother is cooking, so आपकी mother every time, चलो 50 ग्राम salt add करना है, चलो 100 ग्राम ऑयल ऐड करना है, चलो 10 ग्राम मुझे टर्मेरिक, ऐसे हर ग्राम आपकी हर टाइम आपकी मम्मी ग्राम 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 मेजर करती है क्या? नो, योर मदर हैविंग द एस्टिमेशन. मतलब उस मदर को क्या हो जाता है, एस्टिमेशन आ जाता है. चलो 10 पीपल्स का खाना बनाना है, यस एस्टिमेशन. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बाय प्रैक्टिस एस्टिमेशन इज क्लोज टू एक्यूरेट. ओके, हमेशा हमने कंटिन्यूअसली किया तो एस्टिमेशन क्या हो जाता है, क्लोज टू एक्यूरेट. सम पीपल हैव एग्जैक्ट एस्टिमेशन, चलो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी तो नियर अबाउट 10 आ जाती है. सो कब हमारा एस्टिमेशन परफेक्ट हो जाएगा? बाय प्रैक्टिस. okay, so an approximate value, an approximate value, or assuming the value, approximate value of the measurement is called estimation, and estimation is useful
in our day-to-day life, in many time we estimate. Okay, suppose किसी ने आपको time पूछा, you don't have the watch, you approximately say that it's a 7:20. Okay, sometime it may be correct. Okay, so like this, estimation is also important, and estimation means assuming the value. The method of assuming the value of measurement is called estimation. So now the टाइम कीपिंग सर्विस इन इंडिया. ओके, देखो आप टीवी से टीवी पे जो न्यूज वगैरह देखते हो वहां पे जो टाइम आता है, सो टाइम कीपिंग सर्विस जो है इंडिया में, वो हर कंट्री के टाइम अलग अलग होते हैं. सो इंडिया में जो टाइम फिक्स किया है, डिसाइड किया है, दैट इज इंडियन फिजिकल लैबोरेटरी, NPL. NPL means National Physical Laboratory, which is at New Delhi, and the clock can measure the time interval with the accuracy of 1 millionth of second, and the most accurate clock in the world has been developed by the National Institute of Standard Technology in USA. ओके, सबसे एक्यूरेट क्लॉक किन्होंने, कौन से कंट्री ने बनाया है, दैट इज यूएसए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी इन यूएसए. एंड दिस clock will lose or gain 1 second after running of 20 million year. 20 मिलियन के बाद 1 सेकंड आगे पीछे हो सकता है, तब तक ये क्लॉक एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है. 20 मिलियन ईयर तक उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एग्जैक्ट टाइमिंग बताएगा. फिर 20 मिलियंस के बाद स्मॉल चेंजेस हो सकते हैं कि क्लॉक 1 सेकेंड आगे और पीछे हो सकता है. इतना ये क्लॉक एक्यूरेट है. सो इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म दैट इज मोशन. ओके, सो ये जो मेजरमेंट एंड मोशन चैप्टर है, so in that measurement topic we have discussed, and now next topic, that is motion. So when any object change its position with respect to the surrounding, then we say that object is in the motion. When any object change its position with respect to the surrounding, and we call it as that object is motion. And when any object do not change its position, okay, object क्या है, object ने उसकी position change की, no, do not change its position with respect to the surrounding, and we say that object is at the rest. Now we have to see the type of motion. So ये जो motion है, motion के अलग अलग types है. So types of motion. Okay. So motion के अलग अलग type है. So first type, that is translatory motion. Okay, first type है, that is translatory motion. इसमें again two type के motion है, that is linear motion, or also called rectilinear motion, and next one, that is curvilinear motion. Okay, अलग अलग type के motion है. So उसमें है first one, that is linear motion, and rectilinear भी बोलते हैं, and next one उसको rectilinear motion, and next one is curvilinear motion. ओके, ये जो ट्रांसलेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन के अगेन टू सब टाइप है, that is rectilinear motion, and next one curvilinear motion. So when an object is moving in a straight line, that is called rectilinear motion. Okay, when an object move in a straight line and the direction of motion of object remains same. Okay, the direction of motion of object
remain same, and that one is called rectilinear motion. Example, truck moving on a road. Any vehicle की जो रोड पे मूव होती है, that also having the rectilinear motion. Athletes running on a straight track. ओके, स्ट्रेट ट्रैक पे एथलेट्स रन कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो रेक्टिलिनियर मोशन. नाउ नेक्स्ट वन, कर्विलिनियर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ कर्व पाथ. ओके, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मूव हुआ, उसको हम कौन सी मोशन बोलने वाले हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. एंड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ कर्व पाथ, ऑब्जेक्ट है कौन से भी कर्व पाथ पे मूव हो रहा है, ओके, वी कॉल इट एज अ कर्वीलिनियर मोशन. नॉट नेसेसरी इतना कर्व लेना चाहिए, कम भी यहाँ तो चलता है. ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ कर्व पाथ, ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट जा रहा है कर्व पाथ पे, टर्न ले लिया, अगेन फिर से टर्न ले लिया, यू टर्न, देन लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न, राइट टर्न. तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें कौन सी मोशन होने वाली है? curvilinear motion. And this type of motion, the direction of motion of the object changes. वो जो ऑब्जेक्ट एक कार है उसकी मोशन क्या, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज हो जाती है कर्विलिनियर में. Okay, so in this type of motion, the direction of motion of object changes with time. For example, bus moving on a curved road, then a stone thrown up in the air with some angle. Example of that is curvilinear motion. Object straight line में गया, rectilinear. Object curve होके जा रहा है, curvilinear. Then next type of motion, that is rotational motion. Okay, next type of motion, that is rotational motion. When an object move on its own axis. Okay, when an object move on its own axis, and all the part of it do not move the same distance. उसके all part same distance move नहीं करते हैं. For example, upper part more distance move करेगा and lower part less distance move करेगा. So when an object move on its own axis, and that one is called a rotational motion. For example, earth about its axis. Okay, so rotation of earth on its own axis, that is the rotational motion. Other example of rotational motion? Yes, other example of rotational. Yes. Okay, so yes, so when an object, yes, spinning of top, very good. Then wheel of sieving machine, motion of giant wheel, spinning top, then spinning wheel, that is charkha, rotating potter wheel. Okay, हो ना, ब्लेड्स वेगळे करतात. Okay, so rotational motion. Okay, when an object move on its own axis. Toy train own axis ला नाही फिरत नम्रता. Okay, when an object move on its own axis, that is called rotational motion. Example, rotation of earth. Only earth का rotation होता है. फिर yes, all planets rotate होते हैं. Then third type of motion, that is periodic motion. Okay, next one, that is third type of motion, that is called periodic motion. Third type of motion है
Next third type of motion, that is periodic motion. Okay, so when an object repeat its motion along the same path at regular interval of time, and it is called periodic motion. Okay, for example, pendulum है. Okay, pendulum moves forward, backward. Okay, so when an object repeat its motion along the same path at regular interval of time, and that one is called periodic motion. So motion of moon around the earth, motion of the moon around the earth is the periodic motion. Motion of pendulum, it is the periodic motion. Motion of hands of clock, that one also periodic motion. So when object repeat its motion along the same path at regular interval of time, and it is said to be periodic motion. Okay, so the to and fro moment of the object, its position of rest, is also called oscillatory motion. When an object to means forward, fro means backward. So when to and fro motion of the object from the its position of rest, रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है टू फ्रो टू फ्रो from its position, that is rest. Okay, for example, swing, pendulum. So that motion is called oscillatory motion. उसको कौन सी मोशन बोलते हैं? That is oscillatory motion. Clear? Then next type of motion, that is non-periodic motion. Then next one, fourth type of motion, that is non-periodic motion. Next type of motion, that is non-periodic motion. When an object does not repeat. Okay, listen carefully. When an object does not repeat its motion at regular interval of time, it is called a non-periodic motion. Children playing in the park, car moving on the road. There are so many examples जो irregular है, regular interval of time में जो repeat नहीं होते हैं, that one is called non-periodic motion. Then next one, that is random motion. Okay, next one is random motion. So when an object move, the motion of the object, yes, Park, very good, correct, beta. Okay, when the motion of the object not fixed, object move in any direction, any speed, that one is called random motion, and it is also called zigzag manner. Okay, for example, that is dust particle in the air, random motion. Motion of insect, random motion. Then football player, yes, random motion. Yes, gases के जो पार्टिकल होते, सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस के पार्टिकल जो होते, इट मूव इन एनी रैंडम मोशन. Okay, so this, yes, Brownian movement बोलते. Very good, Mayank, good बेटा. Okay, so gases के particle any direction में move करते हैं, that one is called Brownian movement. So those are the example of random motion. So translatory motion, उसमें टू टाइप है. ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में गया तो रेक्टिलिनियर, ऑब्जेक्ट ने कर्व लिया तो कर्वीलिनियर. रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, रैंडम मोशन. Then next one, that is circular motion. Okay, next type of motion, that is circular motion. When the body move around a circular path. Okay, when a body move around a circular path,
and that one is called circular motion. एखादी body जर कधी circular, okay, when an object move in a circular path, and that one is called circular motion. So motion of electric fan, that is circular motion. Motion of spinning top, circular motion. Motion of merry-go round, circular motion. Motion of earth around the sun, that one is the circular motion. Okay, motion of merry-go, they are the circular motion. So next type of motion, that is the circular motion. Then again, next type of motion, that is vibratory motion. Okay, this six is, along with this six, there is seven, that is vibratory motion. Okay, seven type of motion, that is vibratory motion. So it is the सिद्धी काय टाइमपास चालू आहे? सिद्धी डोबाडा काय टाइमपास चालू आहे? Okay, so a kind of oscillatory motion. Vibratory actually कैसी है? Oscillatory है. Oscillatory means to pro from the rest. Object rest में है, to हो गया, pro हो गया from the rest, that is called oscillatory. So ये जो vibratory motion है, vibratory motion actually oscillatory, a kind of oscillatory motion in which object undergoes a change in shape and size is called vibratory motion. Object के change in shape and size होते हैं, that is called vibratory motion. For example, plucking the string of sitar, plucking the rubber, stretching the rubber band. हमने rubber band है उसको stretch किया, then pluck the string of musical instrument or string instrument. ओके यस, गिटार है, ओके, जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्ट्रिंग को हमने प्लग किया, तो वहां पे वाइब्रेटरी मोशन होती है. सो समटाइम देयर इज अ वन एग्जांपल, बट उसमें 2-3 मोशन कंबाइन होते हैं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोशन. फॉर एग्जांपल, object can move more than one type of motion. For example, motion of bicycle. Okay, one boy is on the bicycle and he running the bicycle. So सबसे पहले वो straight line में जाने वाला है, ट्रांसलेटरी, देन रोटेशनल भी होता है, देन उसके जो व्हील है सर्कुलर. ओके, द बर्ड्स ग्लाइडिंग अक्रॉस द स्काई, ट्रांसलेटरी भी है, नॉन पीरियोडिक मोशन भी है. अर्थ अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, रोटेशनल भी है एंड पीरियोडिक भी है. ओके, सो रोटेशनल भी है एंड पीरियोडिक भी है. रेलवे इंजन, ओके, रेलवे देखो, रेलवे में पहले स्ट्रेट लाइन में गई, दैट इज रेक्टिलिनियर. देन उसके जो व्हील है उसमें कौन सी मोशन हो गई? सर्कुलर, और हम बोल सकते हैं दैट इज रोटेशनल. देन उसके बीच में जो मेटल स्ट्रिप होती है, ऑब्जेक्ट टू फोर्थ होता है, दैट इज ऑसिलेटरी. सो लाइक दिस, ओके, combine, okay, combination of different type of motion. So some example कि जिसमें different type of motion की combination होती है. So my dear students, here I have completed your chapter number 11. First part is measurement, second part is motion, translatory motion, rotational motion, periodic motion, non-periodic motion, random motion, circular motion. Then next one, that is vibratory motion, oscillatory motion, combined motion. So those are the type of motion. So today you have to homework. You have to make the list of all type of motion.
Give the heading rotational motion, then write down the example. Give the heading that is flying of kite random आएगा not fix. Okay, so periodic motion के example की list बनाओ, non periodic की बनाओ, rotational की बनाओ, circular की बनाओ, vibratory की list बनाओ, oscillatory की list बनाओ. So this is the homework for you. And here I have completed your chapter number 11, that is measurement and motion. Is it okay, my dear students? Bye.